Audible? We know that if we talk about the ear, in the ear we are having three parts: external ear, middle ear, and internal ear. In the internal ear is for two special purpose. Number one, hearing, and number two, balance. Okay. So in the internal ear, if we talk about the balance, there is a one liquid, there is a one fluid in the internal ear. So suppose I am doing like this, like this. So there is change in the level of fluid. Immediately brain is sensing this. Brain is sensing this. Oh, some changes here, like this. Oh, some changes here. Some changes in the body posture, like this. So brain is giving order to correct the posture. क्योंकि आप देखोगे पानी जरा सा भी ऐसा टेढ़ा हो तो पूरा लेवल बदल जाता है. So water should be at a same level. So that's why inner ear is very much important for balancing. In the inner ear, we are having two parts. One part is called vestibular part. That is for balance. Maybe we'll see this image here. Okay. So now just understand. In the internal ear, we are having two parts. The part number one is vestibular part. The part number two is cochlea. So vestibular part is for balance. Okay. Now, अब कई लोगों को जब इंटरनल ईयर में इम्बैलेंस होता है, मेनी पर्सन आर हैविंग इंटरनल ईयर इम्बैलेंस, so they are getting attacks of vertigo. उन्हें बार बार वर्टिगो के अटैक्स होते हैं. यस. They are having nausea, vomiting. So the attack of vertigo, nausea, vomiting. Why? Because of internal ear. Why? Because of vestibular part of ear, internal ear.
and even they suffer with the hearing loss. Hearing is by the cochlear part of internal ear. जो हियरिंग के एपिसोड्स आते हैं वो कॉकलियर पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर. There is a tinnitus or the ringing sound. Tinnitus, buzzing sound, or the ringing sound in ear. कानों में झन्न झन्न की आवाज आती है. Okay. And there is a fullness of the ear. Okay. So in this way, the internal ear is very much important. So in this disease has given a very beautiful name, that is called Meniere's disease. What is Meniere's disease? The problem of with the fluid of internal ear. It is a chronic disorder. है ना, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम देखेंगे when any patient coming to us with this disease, then we are using the point. Let's see here. So this is the triple warmer 17, one chun above. That is the location of triple warmer 18. In between we have 2 point, triple warmer 17A and ट्रिपल वार्मर 17B. इनके बीच में 2 पॉइंट है. So we are using these 2 point. तो हम इन 2 पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं. Okay. Definitely we can add some other point also, but these 2 points are very important points for Meniere's disease. Clear? भीम जी, मिल गया आपके प्रश्न का जवाब कि ट्रिपल बॉर्मर की क्लास है, बीच में खान कहां से आ गया? ओके, फाइन. So now we are moving to triple warmer 2 number point, which is good for thyroid, parathyroid, thymus gland. Triple warmer 1 for genital or the part below the diaphragm like adrenal gland. Sorry, triple warmer 1. Triple warmer 2 for middle body. This is Dr. Bull triple warmer point. Triple warmer 3 for upper body like pituitary and pineal gland.
So now we are talking about the triple warmer 2. Means, so there is a word that is called autonomic steering. There might be few more points, but the meaning of autonomic steering, thyroid is having some nerve supply. Parathyroid and thymus is also having some nerve supply through the sympathetic nerve and parasympathetic nerve. Through the nerve supply, when to work more, when to work less, this is decided from the sympathetic and the parasympathetic nerve. So, autonomic steering is very much important. कि कब ज्यादा काम करना है, कब कम काम करना है, इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक स्टीयरिंग. Yeah, B also can use triple warmer 17, triple warmer 17A, triple warmer 17B. हम इनका प्रयोग कर सकते हैं. अब हमारा जो हमने, इफ यू रिमेंबर, we have discussed the treatment of external ear, middle ear, and internal ear. If you see in the last past, we have discussed, हमने इन तीन के बारे में बात की थी. उसमें जोड़ देना थोड़ा सा ये सब, है ना. तो आपके, इफ यू आर एडिंग द ट्रिपल वार्मर 17A, ट्रिपल वार्मर 17B, then this point will become very effective. Got it? Remember, you can see the notes what we have discussed lastly. हमने लिम्फ मेरिडियन के समय आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था. How to treat external ear, middle ear, internal ear. The lymph 1 is common point. Lymph 1, we can say this is the lymph 1. The lymph 1, the point on the corner of nail, नाखून के कोने में पाया जाने वाला बिंदु कान का स्पेशल पॉइंट है. So we will use for external, middle and internal ear. Then lymph 1A. Lymph 1A. So this is the lymph 1A. All the point for tubal tonsil, which is connected with the lungs as well as the ear. Lymph 1A. Then for the internal ear, we can add Li 18-1 and triple warmer 18. ओके, अब इनकी लोकेशन आप देख लेना. So this was our previous statement. Now recently what we did for the Meniere's disease, we added 17A and 17B. Clear now? Good, good. So okay, let's come back to that.
our triple warmer meridian. So we're talking about the triple warmer 2. In the triple warmer 2, let's do the autonomic steering of parathyroid, thyroid, and thymus. So, thyroid. Thyroid is very important for metabolism, and we already know thyroid is very much important. So, there are 3 points we have to add for thyroid. Triple warmer 1B as a CMP point. Then triple warmer 2, we already told this is the main point of thyroid. And stomach 10. अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? Stomach 10. Let's see this image. Stomach 10. So how to look at the stomach 10? We can see the Adam's apple here, the elevated part, that is Adam's apple. Now from the Adam's apple, if we go on the side, that is the location of stomach 9. From the Adam's apple, if I go in the horizontal line, I can feel. Now, if I am keeping my one finger on the stomach 9 and I keep my more finger here, like this, I am keeping my multiple finger. Let's keep 3 finger below the stomach 9. Stomach 9 को मिलाकर 4 finger. Let's see this. Stomach 9, then 3 more finger. All the 3 points are stomach 10. नीचे वाले जितने भी पॉइंट हैं सब stomach 10 है. इन्हें हम कहते हैं stomach 10, 10A, 10B. है ना? Stomach 10, 10A, 10B. So 10A, so our we have to use stomach 10. हमें कौन सा पॉइंट यूज करना है थायराइड ग्लैंड के लिए? We have to work on stomach 10. As per the Dr. Voll, this is the stomach 9, this is the stomach 10. 10 for thyroid, 9 for parathyroid. Okay. 9 is at the level of Adam's apple. एक थायराइड के लिए है और एक पैराथायरॉयड के लिए. So in this way, let's see this image.
So this is the location of stomach 9, and just below, that is the location of stomach 10. So stomach 10 is for thyroid, and stomach 9 is for parathyroid. So now we want to do the treatment of thyroid using stomach 10. We want to do the treatment of parathyroid. We will take stomach 9. With that, at CMP point, triple warmer 1B, and the main point, triple warmer 2. ट्रिपल वार्मर 2 दोनों के लिए है, और ट्रिपल वार्मर 1B भी दोनों के लिए CMP पॉइंट है। चाहे थायराइड को ट्रीट करना हो, चाहे पैराथायराइड को ट्रीट करना हो, हम यूज करेंगे। So now there are 3 points. Stomach 9 is for parathyroid. Stomach 10 is for thyroid. Stomach 11 is for thymus. 9, 10, 11 ये 3 बिंदु हैं। तो थाइमस को ट्रीट करना है तो स्टमक का पॉइंट स्टमक 11 कर दो बस। स्टमक 11, ट्रिपल वार्मर 1B एंड ट्रिपल वार्मर 2, तो थाइमस का भी हो जाएगा। यस, so in this way let's see the location of stomach 11। ये देखिए ये हमारा स्टमक 11 है। अब इसे कैसे ढूंढें? नाउ वी कैन सी द कॉलर बोन located on the collarbone in the line of stomach channel located on the collarbone. Stomach 11 is for thymus gland. What is the function of thymus gland? thymus gland का क्या function होता है? thymus gland is the gland located under the sternum bone. हमारी जो छाती में जो sternum bone है ना, इसके अंदर होती है। कौन सी ग्लैंड? thymus gland. thymus gland is the part of immune system. It's making the T cell. ये T cell का निर्माण करती है। So that is fighting with bacteria, virus, with the foreign particles. Okay, तो उसे हम कहते हैं if we want to treat this, अगर हम इसे ट्रीट करना चाहते हैं तो टी हमें स्टमक 11 का प्रयोग करना होगा। सो अगेन we can feel here stomach 9 and here the collarbone. If you drop down to the collarbone, then that is the location of stomach 11. It is clear? So now we want to treat the thymus gland. Our protocol will be like this. Triple warmer 1B, triple warmer 2 and stomach 11. For thyroid and parathyroid, triple
ट्रिपल वार्मर 1B, ट्रिपल वार्मर 2, ट्रिपल वार्मर 1B, ट्रिपल वार्मर 2 फॉर थायराइड स्टमक 10, पैराथायराइड स्टमक। बट फॉर थायराइड, बट फॉर थाइमस, थाइमस के लिए हमें सर्वाइकल गैंग्लियन के पॉइंट भी ऐड करना होंगे। द पॉइंट ऑफ सर्वाइकल गैंग्लियन। So what are the point of cervical ganglion? Let's see here. One point will be stomach 12. एक पॉइंट होगा stomach 12. So stomach 11 as well as stomach 12. Stomach 12 is the very important point. Stomach 12 is also called tunnel point. Tunnel एक छोटी सुरंग है stomach 12, located exactly in between the collarbone. Yeah. So stomach meridian is coming like this. Last one is stomach 11. Then stomach meridian is going the mid of the collarbone, that is stomach 12. ये सुरंग की तरह है। जितने भी यांग मेरिडियन हैं सब इस सुरंग को पार करते हैं। अगर किसी भी यांग मेरिडियन को इस पार्ट को क्रॉस करना है तो ये सुरंग से उसे निकलना पड़ेगा। whether the large intestine meridian, triple bladder meridian, urinary bladder meridian, gallbladder meridian, every meridian has to cross this tunnel. Then only it can cross this part. Let's see in this image. आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है स्टमक 12। तो चलिए स्टमक मेरिडियन तो क्रॉस करेगा ही करेगा, नो डाउट। But if I give you one or two more example, let's see the small intestine. This is a small intestine meridian, but it is also crossing this tunnel. We can see this is the stomach 12. You can see any meridian. If we talk about the gallbladder meridian, it is also crossing this tunnel. So that's why this stomach 12 is very important point. Here we are using it for thyroid. We are using it for thymus gland. अभी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं thymus gland के लिए। कौन सा प्रोटोकॉल शो करना है ये देखिए। सो थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है बुढ़ापे में? जैसे कि आपने जवानी में अपना घर बना लिया, बुढ़ापे में उसमें रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे, पूरी जिंदगी भर रहोगे, बुढ़ापे में भी रहोगे। जवानी में काम कर लिया, पेंशन मिल रही है, बुढ़ापे में आराम से जीवन जी रहे हो। यू आर गेटिंग पेंशन इन द ओल्ड एज फॉर द वर्क you did in the young age. You are living in the home you made in the young age. So thymus has created immunity. Thymus has created immune cell throughout the life. They will remain in your blood, they will remain in your body, so it will, the memory of that infection will remain throughout the life. Suppose some bacteria virus attacked in the childhood, but that memory is in the body now. One in the future, whenever it attack, that memory, because of that memory, you will make antibodies very fast. That's why we are getting, like, even you see COVID was very bad during the first wave, even second wave. After that, people developed immunity. You can see any disease, if it is coming now, after the certain span of time, it has to disappear because of body is having its own immune system. So thymus gland is not working too much in the old age, but it is having old memory that is stored in the blood. Okay. लेकिन बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो
ज्यादा होती है। ओके, फाइन। So now I would like to bring a focus on the other point. We can see here urinary bladder 10, 10A, 10A1, 10B, 10C. 1, 2, 3, 4, 5 point. So we have to understand this 4 point. A, A1, AB and 10B and 10C. ये पॉइंट हमारे सर्वाइकल गैंग्लियन के हैं। Cervical ganglion is very much important. Ganglion, the nerve from the cervical ganglion is going toward the thymus, even going toward the head region, controlling sympathetic and parasympathetic nerve innervation. हमारे ब्रेन की, so brain and the thymus gland means some part of the chest is supplied by cervical ganglion. So what is cervical ganglion? Cervical ganglion means mini brain station. So we are having mini brain station here, who is controlling brain as well as your thymus gland. Okay. सर्वाइकल गैंग्लियन के भी कई पार्ट होते हैं, लाइक सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. There are many parts. Superior cervical ganglion controlling upper part, like pineal gland, pituitary gland, eye, face, and all the gland of the face. The middle cervical ganglion controlling this part, thymus, this part. This part is controlled by middle cervical ganglion. And the lower cervical ganglion, the inferior cervical ganglion controlling your lungs, heart, upper limbs, ribs. तो cervical ganglion जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर सर्वाइकल गैंग्लियन सिर को कंट्रोल करता है, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन आपके थाइमस को, गले को कंट्रोल करता है, लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन आपके लंग्स को, हार्ट को, हाथों को, सबको कंट्रोल करता है. So cervical ganglion controlling upper part, middle part and the lower part. What is the meaning of ganglion? Ganglion means we are having mini brain here. Okay. The lower cervical ganglion is very much important. That is called stellate ganglion. बात आई है तो बता देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है ऐसे. Stellate ganglion. Lower cervical ganglion is called stellate ganglion, which is controlling your ribs, heart, and all. So right now, just understand, we are talking the point of the cervical ganglion. अभी हम cervical ganglion के point की बात कर रहे हैं. कितने प्रकार का है? Upper, middle, and lower cervical ganglion. So we can see the point here: 10A, 10B, 10C. These all are the point of cervical ganglion. यहां पर हमारा 10A है फॉर अपर सर्वाइकल गैंग्लियन, 10B फॉर मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, 10C फॉर लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन. इस तरह से सारे पॉइंट्स हैं. ओके, तो इन्हें हम कैसे लोकेट करें? सपोज समवन इज सफरिंग विद द ब्रेन इशू, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पुअर सप्लाई, 10A. Thyroid, thymus gland and this gland, 10B. Ribs problem, heart problem, 10C. But we will use all ABC. Whether the problem in the upper body, middle body, lower body, so just we are covering all. तो पहले हम 10A की लोकेशन को समझ लेते हैं. Let's try to understand the location of 10A. Sorry, 10. UB10. Because UB10 is very important point and you should know this point. आपको इस point का
बहुत अच्छी तरह से पता होना जरूरी है। UV10, आई विल शो यू द लोकेशन। आप इस इमेज में देखिए, फिर मैं आपको समझा बताऊंगा कि कैसे ढूंढना है इसे एग्जैक्टली। So we can see here urinary bladder 10. So there is a hairline, natural hairline. From the hairline, if I go half chun above, अगर मैं हेयरलाइन से आधा चुन ऊपर चला जाऊं, हाफ चुन अबव, we will reach on this bladder 10. From the central, it is located 2 finger apart. अगर हम सेंटर से जाएं तो ये 1.3 चुन अपार्ट होता है, विच इज नियर अबाउट 2 फिंगर और लिटिल लेस देन द 2 फिंगर। तो देखिए कैसे ढूंढना है इस पॉइंट को। फ्रॉम द सेंटर you have to go 2 finger apart, little less than the 2 finger, because 2 finger is 1.5 chun. We are talking about the 1.3 chun. Natural hairline से हाफ चुन above. ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर 10। अब देखिए जो UV10 पॉइंट है, ये बड़ा गजब का पॉइंट है। Why? Because this is the point of medulla. Medulla oblongata. Medulla means BB. मेडुला का मतलब क्या है? बीबी। बीबी जानते हैं? बीबी का मतलब है बीटिंग एंड ब्रीदिंग, जिससे आपकी बीटिंग और ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, उसे कहते हैं बीबी। दैट इज मेडुला। किसी ने कहा मेरे को बीटिंग बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गई। किसी ने कहा कि दिल धड़ 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 कर रहा है, तो कौन शांत करेगा? बीबी शांत करेगी। कैसे? मेडुला। मेडुला। कुछ ना करो, UV10 को सेडेट कर दो, सुजोग में कर दो, और जस्ट टेल द पेशेंट लाई डाउन। Keep your finger like this on the UV10. The finger should come. Just do the very gentle pressure. ऐसे भी नहीं है दबाने की जरूरत है, because the person is lying down, because of the gravitational force there will be automatic pressure is coming on the UV10. अगर मैं अभी लेट जाऊं और कोई मेरे हाथ ऐसे सिर के पीछे रख ले, प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? सिर ऐसे नीचे पड़ा हुआ है। If you press the UV10, it will control beating and breathing. पवन जी ने आपने यूज किया होगा UV10। पवन जी यूज किया आपने UV10 फॉर कंट्रोलिंग द बीटिंग, ब्रीदिंग, पाल्पिटेशन, हाई हार्ट बीट? कुछ लोगों ने किया होगा, जो है ना। सर UV10 यूज करता हूँ सर, प्रॉपर करते हो रेगुलर ना? यूज करता हूँ। इट्स अ वेरी बहुत अच्छा, बहुत फेमस, अच्छा काम करता है सर। वेरी फेमस। बड़ा इफेक्टिव पॉइंट है सर, बड़ा इफेक्टिव पॉइंट है सर। मैंने इट्स अ खुद वेरी, अपनी वो, वो चीन में बताया, बेटे की मिसिस थी, उसको जो मैंने आपको बताया था ARDS हो गया था सर। हाँ हाँ। तो ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम थी सर उसको। हम्म। वेदांता में एडमिट थी, मैंने वो UV10 ही उनको लगाया, सीडेट किया, तो काफी उसको रिलैक्स मिला जी। उनका ब्रीथिंग अपने आप डाउन 100 150 160 चल रही थी सर। उसकी जो वो थी, वो डाउन हम्म। होके 90 95 के आसपास आ गई सर, विद इन सो विद सी, इन 1 आवर। the breathing was very high, palpitation was there is a high heartbeat, high breathing rate. Just you sedate the UV10
and you can see it will calm down. Suddenly one patient called me, oh, tell me something, my heart rate is very high. Then I told UB10, he saturated the UB10 the sujok, and within the span of few minutes you will see the result. तो UB10 हमारा पॉइंट है किसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा मींस बीटिंग एंड ब्रीदिंग। क्लियर, ये हमारा बीटिंग और ब्रीदिंग से कनेक्टेड है, बोथ साइड। नाउ वी आर कीपिंग अवर 4 फिंगर लाइक दिस। अब हमने 4 अंगुल रख दिया। So this is the UB10 from the natural hairline going half turn above, that is the UB10. Now we are keeping the 4 finger on the neck. So 10A, below this 10A, then 10A1, 10B, 10C. गर्दन की लंबाई 4 अंगुल की होती है भाई, हर एक अंगुल के नीचे एक पॉइंट। गर्दन की लंबाई 4 अंगुल की है। The neck is having length of 4 finger. Now, if I massage the upper part, it will control the upper ganglion. If I massage the middle part, it will control the middle ganglion. If I massage the lower part of the neck, it will control the lower ganglion. आप मसाज भी कर सकते हो। Someone is telling, oh, can you do something for my heart? Go to the lower ganglion. Oh, can you do something for my thyroid, thymus, and this middle part, middle ganglion? Oh, can you do something for my head region? You want to improve the nerve supply of the head region, treat the upper ganglion or treat all the 3 ganglion for any problem. So in this way, right now we are discussing the treatment of thymus gland. अभी हम thymus gland का ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो thymus gland का जो ट्रीटमेंट है, so what we'll do, this is the neck, ये गर्दन है, ये पूरी गर्दन है, जितनी भी गर्दन है। गर्दन की लंबाई 4 अंगुल की होती है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड द 4 फिंगर। 1, 2, 3 and 4. Below every finger we'll mark 1 point. This is the UB10, 10A, 10A-1, 10B, 10C, 10A, 10A-1, 10B and 10C. ओके, तो ये था हमारा थाइमस का ट्रीटमेंट। और थाइमस के ट्रीटमेंट के साथ अब ध्यान रखिएगा, नेक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गर्दन बहुत महत्वपूर्ण है। गर्दन के माध्यम से हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। Now let's move ahead and see the another point. देखिए यहाँ क्या लिखा है, now I would like to tell you, if you remember, so we have discussed 10, हमने ट्रिपल वॉर्मर 2 का डिस्कशन कर लिया। वन मोर पॉइंट, ट्रिपल वॉर्मर 1D, कौन सा बिंदु है, ट्रिपल वॉर्मर 1D।
Triple warmer 1D is the very good point for mammary gland and the breast tissue. क्योंकि देखो ट्रिपल वार्मर 2 नीचे है, ट्रिपल वार्मर 2 यहाँ नीचे है। टीसीएम में ये पॉइंट यहां था, इन द टीसीएम इट वाज हियर, बट इन द डॉक्टर बोल भी है पुश्ड इट डाउन। डॉक्टर बोल में हमने इसे डाउन पुश कर दिया, दैट इज ट्रिपल वार्मर 2। इसे नाम दे दिया ट्रिपल वार्मर बंडी, दैट इज फॉर ब्रेस्ट और फॉर मेमोरी ग्लैंड। ये ब्रेस्ट के लिए है और मेमोरी ग्लैंड के लिए ये वाला बंडी। जो टीसीएम में हमारा ट्रिपल वार्मर 2 था। ना सपोज इफ आई वांट टू वर्क ऑन द ब्रेस्ट, मुझे मेमोरी ग्लैंड्स पर काम करना है। तो मेमोरी ग्लैंड पर काम करने के लिए, मेमोरी ग्लैंड इज द पार्ट very deeply connected with the hormones. Breast are connected to the hormones, right or not? Breast hormone से connected है कि नहीं है? Yes. So that's why pituitary gland is having very great influence on the breast, because pituitary gland is the master gland of all the hormones. So if you want to work on the breast, अगर आपको ब्रेस्ट पर वर्क करना है, what will do, हम क्या करेंगे? We will take the triple warmer 3, because triple warmer 3 is the point of hormone or the pituitary gland. We will take the triple warmer 1D, which is the point for breast, and we'll take CMP point. There are one more point important, that is stomach 41A. इसके बारे में आपको बता दूंगा। ये 4 पॉइंट से हम ब्रेस्ट टिश्यू का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can treat, we can work on the breast lump, we can work on the heaviness of the breast, we can work on the tension of the breast. With the help of these points, we can work on these conditions. As per the Dr. Bowl, जब भी ब्रेस्ट में कोई गांठ होती है तो हम ये 4 पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। यस, सीएमपी पॉइंट तो यूज करेंगे करेंगे, डेफिनेटली सीएमपी पॉइंट विल बी देयर, ट्रिपल वार्मर 1D विल बी देयर, ट्रिपल वार्मर 3 फॉर हार्मोन्स, एंड वन मोर पॉइंट दैट इज स्टमक 41-A। तो चलिए पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूं, देन आई विल कम टू द stomach 41-A। तो चलिए ये इमेज देखिएगा। ये हमारा पैर है। एट द एंकल जॉइंट वी आर हैविंग स्टमक 41। If we are going 2 finger down or the 1.5 thumb down, that is stomach 42। ये हमारा अगला बिंदु है, इसका नाम है स्टमक 42। इसके बीच में एक पॉइंट लेना है, दैट इज स्टमक 41A, दैट इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर ब्रेस्ट और द मेमोरी ग्लैंड। ये वही स्थान है जहां पर फीमेल की पायल टच करती रहती है। एम आई राइट और नॉट? फीमेल जो सिल्वर की पायल पहनती हैं, द फीमेल आर वियरिंग द सिल्वर हियर, एंड सिल्वर आर फॉर sedation, फॉर calming down. So this 40 stomach 41A is the very good point for breast lump. Let's see the location of this point here.
At the ankle joint, this is the location, the center of the ankle joint. We can find the depression here, that is stomach 41. इसका नाम है stomach 41. Now from here, if I go 2 finger down or the 1.5 tone down, that is stomach 42. In between, we are having stomach 41A. This is the point. तो जब पायल पहनते हैं ना, ये थोड़ा यहाँ टच करती रहती है. This is the point. We can do massage. We can stimulate the point, or we can ask to wear पायल. चांदी की पायल और चांदी की पायल ना पहनना हो तो इस पॉइंट को काम डाउन करने के लिए आप काले रंग का धागा पहना सकते हो. यहां पर गोल्ड नहीं पहनाते. पैरों में चांदी पहनाने का रिवाज है. अपर पार्ट में गोल्ड, लोअर पार्ट में सिल्वर. This protocol will work on lump or the nodule of the breast, even any other problem of the breast. It is clear. So now we have to close the session today. I have my patient. Now we'll see you tomorrow. अब हम मिलेंगे कल. Thank you so much. Closing the session.